सवाल है या कुछ डाउट है तो मैं इस पे आई कैन स्टॉप हियर एट दिस पॉइंट एंड देन गो टू नेक्स्ट आंसर, या किसी को कोई अपना कमेंट करना है, क्योंकि अगर हम उसको थोड़ा सा उसमें स्टैगर्ड तरीके से लेंगे तो सारा कुछ एनीबडी हैज प्रॉब्लम कि मैंने जो कहा उसके तरफ आपका भैया I guess the only concern I would have regarding this definition is the implementation of the definition in the Indian context. For example, today we rely on disability certificates for getting all kinds of benefits or going to the court in case we don't get benefits. And then the mechanism to convert this definition, which is very inclusive, into something more concrete like a disability certificate is going to be challenging. It requires a lot of focus and a lot of policy making. See, I would not deny that. My point is only this much, that as lawyers, basically we firstly need to have a legal toehold. Without a legal toehold, the court will throw you out of straight away. I am saying is that the definition of person with disability in the CRPD, married with the section 47 jurisprudence, can expand some things so that we should not as lawyers think that there is not even a window. See, if we feel there is a window, only then the further kind of building up will happen. I am only sort of saying, the way I understood my mandate for today morning was, there is no point in looking at the concepts of the CRPD unless and until there are some ways in which we can use them. And use them now. जब legislation बन जाएगा तब तो हम legislation को implement करेंगे ना. आज की तारीख में हमारे पास legislation नहीं है. तो legislation के ना होते हुए भी CRPD हमारे लिए कहाँ पे कारगर है, कहाँ पे काम आएगी, where is it useful for us is the focus of my presentation. And I am putting out, see, मैंने 4 निकाले हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको 4 और मिलेंगे. That is not the issue. The point is basically this, to get that kind of creative imagination going, because this is about first principles advocacy. See, there's no doubt on that count, you're absolutely right. But it's also true that the disability certificate and what you get through the disability certificate is one kind of entitlements. The general, generic thing of discrimination is a much larger thing. We have not really developed a jurisprudence of discrimination. This gives us an opportunity to do so. Okay. Anybody else has a comment? Yeah. Yes. Hi friend, how are you? आप बोलो नहीं तो मुझे मजा ही नहीं आता. See disability in social context. There are many people who belong to EWS category in developing countries. So how do you see their entitlements possible in such countries? I'm sorry? The persons belonging to EWS will also be covered by the definition of disability if we see disability in social context. No, see the thing is, it always has to be seen impairment plus social context. It's not social context alone. Because that is not what we are covering either by the CRPD. See, the factor of the impairment cannot be wished away either. And neither does the CRPD do so. If you look at the definition of CRPD, and we're all familiar with it, it very clearly says, no, it has to be a person with. Persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others. So it has to be both. So my further question is, does it not make 2 components? One is the medical definition of disability, and the second is identification of barriers with respect to those people. No doubt about it. See, but the point somewhere is what we have to appreciate is that today, because we have not really included people with impairments even, the impairment and the barriers are almost coexistent. As the rights-based policy for people with disability improves, you may actually have a situation where somebody may be a person with impairments but may not be a person with disability. I'm actually putting forth very futuristic thing. लेकिन not today. आज की तारीख में नहीं कह सकते हैं. आज की तारीख में मुश्किल है कहना.
It is true that आपके पास कोई सी भी impairment है और किसी भी क्लास उसमें आप belong कर रहे हैं, एक लेवल का बैरियर आपको confront करता है impairment की presence से. See, the only kind of places where people might have an experience and that experience may not become a disability is possibly in the realm of psychosocial. Okay, you may go through a phase, आपका एक crisis आया, आप crisis से निकल गए, आपको एक supportive environment मिला, आप you moved on. वो impairment आई और चली गई, आप disability नहीं बनी, पर बहुत सारे लोगों के लिए बन भी सकती है. मैं सिर्फ आप लोगों को एक नए नजरिए से बोल रही हूँ कि ये UNCRPD की डेफिनेशन, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट की डेफिनेशन और सेक्शन 47 की जूरिस्प्रूडेंस, इन तीनों चीजों को का मिश्रण करके आप आगे सोचिए तो आपको कुछ ऐसे रास्ते मिलेंगे जो आज की तारीख में नहीं है. Okay, the second point I want to move to is your whole realm of equality and non-discrimination. Now, we have under the Indian Constitution, Article 14, which talks in terms of everybody is equal before the law and has equal protection of the law. We have Article 15, which prohibits discrimination on certain grounds. We have 16, which talks in terms of equality of opportunity in employment, and again prohibits discrimination on certain grounds. अब हम सबको मालूम है कि जो grounds named हैं Indian Constitution में, उसमें disability नहीं है. Which means कि जब आप disability के basis पे कोई भी classification करते हैं, the moment you classify any law policy which is going to be making for a specific kind of, it might be like, what should I say? In some ways, singles out people with disabilities. The Indian Constitution per se doesn't prohibit it. It does it for, say, it does it for sex, it does it for race, it does it, there are prohibited grounds which the Indian Constitution does not permit. But disability is not counted in them. My point is basically this, that the UNCRPD, in recognizing equality and non-discrimination, has very explicitly prohibited any kind of classification of the or any discrimination on the basis of disability. So, आप अगर 15-16 को CRPD के साथ में लाते हैं तो disability becomes a ground, which means कोई भी ऐसी पॉलिसी, कोई भी ऐसा कानून जो किसी तरह से पर्सन विद डिसेबिलिटी को एक्सक्लूड करता है, उसको CRPD ने पर से खराब कर दिया. आपकी कॉन्स्टिट्यूशन उसको एक्सप्लिसिटली नहीं करती, लेकिन दैट इज वेयर जो सुप्रीम कोर्ट का जूरिस्प्रूडेंस है, जो हमारे मतलब अपने कोर्ट का जूरिस्प्रूडेंस है कि एनी इंटरनेशनल कन्वेंशन व्हिच एनहांसेस योर ह्यूमन राइट्स, लेजिस्लेशन ना भी आया हो, आप उस कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. विशाखा जो आपका सेक्शुअल हैरेसमेंट का वो पूरा उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस बनाया, वहीं से बनाया. So a couple of days ago, I think Rahul Cherian along with somebody had put out an article in the Hindu where he made a big case for the fact कि जब तक कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं करेंगे, हम मतलब जो प्रोटेक्शन फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज है वो उस ऑर्डर में नहीं आएंगे. I am trying to take the line that if today there is a legislation which is discriminating on the ground of disability, I can say this is an infringement of my fundamental rights and go even if 15 and 16 have not been amended. See, मैं आपको कहीं पे बोल रही हूँ कि दोनों चीजों को साथ में पढ़ना वाली बात है, क्योंकि see the making of the legislation is a political exercise. It's not just a technical exercise, it's a political exercise. जब तक हम लोग चाहे वो politicians को उसके लिए टाइम मिलना चाहिए, they must get the requisite time, and a certain amount of consensus must emerge within the community. Only when the two things are together, you will get a legislation. Now, if that is going to be the situation, that is, it's a very normal process of lawmaking. If that's a way in which political action happens. So I don't per se, I'm not bemoaning the fact, I'm just recognizing it as a fact. Now, if that is a fact, then should we say कि इंडिया में CRPD का बेनिफिट ही नहीं मिल सकता जब तक कि
a very हम लोगों के लिए as lawyers it would be a very foolish kind of a stance to take. वो ऐसा वाला बैकलेटर स्टांस होगा जो आपकी प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के खिलाफ जाएगा. So that would be my take somewhere is, if you look at these two together, then disability becomes a prohibited ground. It is an invidious ground. It is a ऐसा वाला ग्राउंड है जो आपको अब अगर उसके बेसिस पर कोई भी कानून बनता है, कोई भी पॉलिसी बनती है, तो उसको चैलेंज करना अब आपका बुनियादी हक हो गया. आप चाहे हाई कोर्ट चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहिए, आप कहेंगे कि नहीं ये कानून पर से खराब है. मतलब ये सबसे बड़ी मेरे मुताबिक आपको एक जो उपलब्धि हुई है, दिस इज अ बिग सॉर्ट ऑफ यूटिलिटी दैट यू हैव गॉट अबाउट बिकॉज ऑफ द सीआरपी. जो उनका इक्वालिटी नॉन डिस्क्रिमिनेशन का आउटलुक है, उसका सबसे बड़ा ये फायदा है. फिर सीआरपीडी क्या करता है? इट सेज बोथ इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट एंड इक्वालिटी ऑफ आउटकम. और आप मतलब दोनों चीज बोलते हो. इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट मीन्स कि जब आप पर से कोई चीज कहते हो कि एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को नहीं मिलेगी क्योंकि वो पर्सन विद डिसेबिलिटी है. फॉर्मल इक्वालिटी एंड इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट का वो बेसिक सी चीज है ना, कि आप ये बोल रहे हो सबको एक जैसा दीजिए, समान दीजिए, गिव टू एवरीबडी द सेम. एंड इफ यू से नहीं सबको देंगे लेकिन पर्सन विद डिसेबिलिटी को नहीं देंगे, तो वो परमिटेड है. वो एक चीज है. फिर दूसरी चीज हम कहते हैं कि आपने सपोजिंग सब सीढ़ियां चढ़ने की पूरी आजादी दी. एवरीबडी हैज द राइट टू क्लाइंब स्टेप्स. आई एम अ व्हीलचेयर यूजर, आई कांट क्लाइंब स्टेप्स. The idea of climbing steps is that all of us should be able to either reach a classroom or reach an office or reach a hospital or reach a court, wherever. If I can't reach it, अगर मैं वहां पहुंच नहीं पाया, तो इक्वालिटी ऑफ आउटकम तो नहीं हुआ ना, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट चाहे हुआ. सीआरपीडी जो कह रही है और हमारी अपनी भी जो जूरिस्प्रूडेंस है वो ये कह रही है कि इक्वालिटी ऑफ आउटकम जब तक नहीं होता, इक्वालिटी नहीं हुई, समानता नहीं हुई. समानता तो तब है अगर हम सब पढ़ने आ रहे हैं और हम सब लोग क्लासरूम में पहुंचे. मैं क्लासरूम में पहुंचू नहीं, आप पहुंच जाएं, तो दिस इज नॉट इक्वालिटी. इफ आई कुड नॉट रीच दैट क्लास, दो यू अलाउड मी टू कम अप द स्टेप्स आई कांट क्लाइंब, इट्स ऑफ नो यूज टू मी. सो आपकी वो दो चीजें हैं. तो आपने बोथ फॉर्मल इक्वालिटी एंड सब्सटैंटिव इक्वालिटी रिकॉग्नाइज की. आपकी कॉन्स्टिट्यूशन भी ये रिकॉग्नाइज करती है, लेकिन आपकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिसेबिलिटी को एक प्रोहिबिटेड ग्राउंड नहीं बनाती. अगर आप सीआरपीडी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं तो डिसेबिलिटी बिकम्स अ प्रोहिबिटेड ग्राउंड. इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, इक्वालिटी ऑफ आउटकम, फॉर्मल एंड सब्सटैंटिव इक्वालिटी